Sukhmani Kaur. And I am Sukhja Kaur. It is my pleasure to introduce our Honorable Chief Guest, respected Ms. Meena Kumari Pawar, the Punjab Police Inspector, who has graciously accepted our invitation to join us today. She is a Commonwealth Games player in weightlifting, world champion in powerlifting, one of the strongest and powerful women of India. On the behalf of our school community, we welcome you all on this gracious occasion. We all are different, but one thing unites us, and it is independence. We should honor it and never forget how hard it was to acquire it. March Past is all about synchronization and teamwork. Marching in unison demands alertness and unspoken coordination, and to enhance this feeling, our disciplined students will perform the March Past. Now, I call head boy Master Danish and head girl Miss Himangi to come and take permission to start the March Past. Ma'am, we are ready. Can we begin the march? Yes. Thank you, ma'am. About turn. St. John's Convent School follows the house system to conduct different co-curricular activities. We have 4 different houses. The color of each house has been carefully chosen to reflect the core values of the house. Leading the March Past by the school head boy Master Danish and head girl Miss Himangi and vice head girl Miss Dia and sports secretaries Master Arman and Miss Karmanjot Kaur. The 4 distinctive houses are the Mahatma Gandhi House, The Subhash Chandra Bose House, the Rabindranath Tagore House, the Kalpana Chawla House, the Mahatma Gandhi House or the Green House led by Master Gursimran and Miss Angel symbolizes the wealth of our unity in spite of diversified culture and tradition. It denotes upbringing, prosperity, generosity and abundance of Mother Nature. the Subhash Chandra Bose House or the Red House, led by Master Sahib Jod and Miss Samarine, symbolizes the spiritual strength of mind hidden with the spirit of tolerance, peace and sacrifice. The Rabindranath Tagore House or the Yellow House led by Master Gurpratap and Miss Ambersis symbolizes the bright daylight bringing in the sunshine of hopes and dreams. Yellow signifies joy, happiness, optimism, imagination and idealism. We finally have the Kalpana Chawla House or the Blue House, led by Master Natik and Miss Priyanti Gupta. Blue signifies harmony, devotion and loyalty. The highest bliss of human soul is love, and noble as love is devotion to our motherland. The example of great man should motivate the future generation to work unselfishly and with self-sacrifice for the progress and political development of the nation. On this day, we stand united, celebrating the spirit of independence, a spirit forged in the crucible of struggle, sacrifice, and unwavering strength.
As we celebrate our independence, let us remember that true strength is not measured by the size of our armies or the wealth of our economy. It is measured by our resilience in time of hardships, our compassion in times of need, and our unity in times of challenge. Today, we honor the past, embrace the present, and we look forward to a future built on a foundation of our collective strength. A future where freedom is not just an opportunity but a right, but a responsibility to ensure that every citizen can live with dignity, opportunity, and peace. Group, attention! Stand at ease! Attention! Stand at ease! Attention! Group, salute! Hands down! On this Independence Day, let us pledge to stand strong, to stay united, and to strive every day to make our nation a beacon of hope, justice, and freedom. Because together we are stronger, together we are unstoppable. So keep the flag of freedom flying high until your last breath. The plant symbolizes knowledge and wisdom, the knowledge which eradicates darkness and innocence from the world. With this thought in mind, let's welcome our honorable chief guest, respected Ms. Meena K. Pawar, Father Verghese Kachapeli, our director, Sister Vinia, our principal, Mr. Rahul Banot, Mr. Sonu Mittal, parents representative, and Mrs. Sumandeep Kaur, along with our student, Ms. Assis Kaur, to plant the sapling to give a new life into the world. With the sapling now in the ground, we have taken the first step toward a greener future as it grows. Today we plant these saplings with hope and care. As it grows, may it become a strong, healthy tree that contributes to the beauty and health of our environment. Let's nurture it and watch it thrive. With the sapling now in the ground, we have taken the first step toward a greener future. As it grows, may it serve as a reminder of our last commitment to the environment and our desire to leave a lasting positive impact on the world. Thank you all for planting a sapling. Now, I request all the students to proceed to the auditorium. Dear friends, as our dignitaries make their way towards the stage, they are proceeding amidst us adjoining with our director, Reverend Father Verghese Kachapilli,
and our principal, respected Sister Vinya. Let us rise up and welcome them with a big round of applause. We are blessed to have amidst us Punjab Police Inspector, respected Miss Meena Kumari Pawar, Sub-Inspector Mr. Sukhjinder Singh Khera, accompanied by Sonu Mittal, press reporter and member of local managing committee, and Mr. Rahul Bhanot, the member of Parents Association. Let's again have a big round of applause for our esteemed guests. Good morning, everyone. It is my pleasure to introduce our honorable chief guest, respected Ms. Meena Kumari Pawar, the Punjab Police Inspector, who has graciously accepted our invitation to join us today. She is a Commonwealth Games player in weightlifting, world champion in powerlifting, one of the strongest and powerful women of India. On behalf of our school community, we welcome you, ma'am, on this gracious event. Freedom in the mind, faith in the words, pride in our souls. Let's salute the nation on this Independence Day. Good morning to one and all present here. I am Harman And I am Navreet. and we are gathered here today to celebrate the 78th Independence Day of a great nation. It's a privilege to stand before you on this historic occasion. Independence Day is not just a date on the calendar. It's a reminder of the sacrifices made by countless heroes who fought for our freedom. Today we come together to pay homage to their bravery and celebrate the spirit of unity and progress that defines our nation. How lovely is this day, and so does the ambience and aura surrounding it. Soon, the colors of this merriment will unfold and will transport us to another world. But before we unfold its extravaganza, let's welcome our guests. We feel honored to have our chief guest, the Punjab Police Inspector, respected Miss Meena Kumari Pawar. In the All India Police Games matches, Miss Meena won the gold medal in the 68 kg category from 2011 to 2014 and maintained the record in snatch and jerk. During this, she won consecutive gold medals in the Senior National Championship from 2011 to 2014. In 2015, she started power weightlifting and won Senior National Championship Powerlifting and Senior Interstate Championship and Federation Cup. She competed for India in the World Championship Powerlifting events held in America in 2019 and became the world champion by getting the gold medal. And now she is posted as in charge of Traffic Cell Jalandhar. So let us have a big round of applause for Miss Meena Kumari Pawar, who is a powerful woman of India and the biggest inspiration for all Indian women. Now, I request Reverend Father Verghese Kachapilli, our director, to welcome our chief guest with a bouquet. We are also immensely happy to have Sub-Inspector Mr. Sukhjinder Singh Khera and the Head Constable Mr. Jasveer Singh. Now, I request Sister Jessie and Sister Preeti to welcome them with the bouquet. It's a great pleasure to welcome our director, Reverend Father Verghese Kachapilli, a man of distinct insight, a fountainhead of illuminating ideas, and idol of knowledge, experience, and inspiration to all of us. Now, I request Sister Vinya to welcome our director with a bouquet. I would also like to extend a hearty welcome to our very ardent and diligent principal, Sister Vinya, for the motivation and courage. Now, I request Mr. Hardeep, our staff secretary, to welcome our principal with the bouquet. I would also like to extend a hearty welcome to Mr. Sonu Mittal and Mr. Rahul Bhanot, the parents' representatives. I request Mr. Danish, our head boy, Miss Himangi, our head girl, to welcome them with a bouquet.
Once again, we welcome you on this auspicious event. We have a wonderful lineup of events that capture the essence of patriotism and freedom. Light expels the darkness and brings in our life prosperity and happiness. We begin this day by kindling the lamp of knowledge and wisdom. I invite our beloved director, Reverend Father Verghese Kachapilli, and admirable principal, Sister Vinya, our staff secretary, Mr. Hardeep, and the cultural club in charge, Mrs. Reena, to accompany our highly regarded chief guest, Inspector Meena Kumari Pawar, to kindle the traditional lamp. I also invite Mr. Sonu Mittal and Mr. Rahul Bhanot for the same. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय. God answers every prayer. When idea is not right, God says no. When the time has not arrived, God says go slow. we may have good plans for ourselves. But God has better plans. A prayer purifies mind and takes away negativity. Now, to express our commitment to our nation and feel closer to God, let's join our hand and welcome our lovely students to invoke the Almighty and invoke dance. सारी सृष्टि जिससे जागी बीज वही दिव्यवाणी
सारी सृष्टि जिससे जागी, बीज वही दिव्यवाणी। कहते हैं सब ज्ञानी, कहते हैं सब ज्ञानी, सत्य सनातन शाश्वत पावन, प्रणव की गुंजन एक है बस वही जो है अनंत और अनादि, अनादि। सारी सृष्टि जिससे जागी, बीज वही दिव्यवाणी। सारी सृष्टि जिससे जागे, बीज वही दिव्यवाणी। Thank you friends for taking us closer to God. सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। India is a land of various cultures and a rich heritage. Our nation's flag is our pride and symbol of freedom. Patriotism consists not in waving flag, but in striving that the country shall be righteous as well as strong. Let the tricolor revive our spirits and keep it burning for all times. With great anticipation and joy, let's welcome our performers to the stage. आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। There was a time when India was one of the most flourishing countries of the world, और हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। Good morning everyone. We are the students of class 5 Daisy are going to deliver a speech on the significance of the saffron color. As we celebrate our 78th Independence Day, I want to talk to you about a color that is deeply ingrained in our nation's history and heritage is saffron. Saffron represents the courage, strength and sacrifice of our freedom fighter who fought tirelessly for our country's independence. Let us draw the inspiration on the saffron color and continue to strive for a future where every citizen can live with pride, dignity and freedom. Jai Hind! पहचान भी होती है, इन्हें प्रभु है राष्ट्रध्वज, केसरिया, सफेद। आओ अब इन तीन रंगों का महत्व जानते हैं। अरे अरे रुको, आज तो स्कूल से छुट्टी है, फिर तुम सब इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता, आज 15 अगस्त है और हम सब इंडिपेंडेंस डे का कार्यक्रम देखने स्कूल जा रहे हैं। ये कैसा फंक्शन है? आज हमारा राष्ट्रीय पश्चात स्वतंत्रता दिवस का फंक्शन है। आज स्कूल में तिरंगा लहराया जाएगा और रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। अच्छा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे एक बात बताओ कि तुम सबने ये केसरिया रंग क्यों पहना है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है जो देश की शक्ति, त्याग, बलिदान और मेहनत का प्रतीक है। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई भारत की एक महान वीरांगना थी।
मैदाने जंग में मरना है, फिरंगी से नहीं डरना है, कहती रानी लक्ष्मीबाई ये वादा पूरा करना है। भगत सिंह एक भारतीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें ब्रिटिशर्स ने फांसी पर लटका दिया था। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। प्रयाग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। वह जीवन भर मिट्टी से सोना पैदा करने की तपस्या करता रहता है। आज हम भारतवासी चैन की नींद सोते हैं तो ये केवल अपने वीर सैनिकों की वजह से ही है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो आज हम सब ये केसरिया रंग पहनकर उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि देंगे जिनकी वजह से आज हम ये आजादी जी रहे हैं। जय हिंद। आराम से खड़े होना। हो गया बेटा, पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, पीछे। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी झोंकने वाली दग 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदें लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला दे, फिर रंग तू खिला खिला दे, ये सब तू मिला मिला दे, फिर रंग तू खिला खिला दे। और मोह तू रंग दे बसंती यारा, मोह तू रंग दे बसंती, मोह मोह तू रंग दे बसंती, मोह मोह तू रंग दे बसंती, मोह मोह तू रंग दे बसंती। शांति और सत्य का संकेत। Fellow citizens, as we celebrate our Independence Day, I want to talk to you about a color that represents the essence of our freedom movement. White. Ashok Chakra. The navy blue color of Ashok Chakra represents the color of sky and ocean. The universal truth. Ashok Chakra has 24 spokes, which is taken from 24 letters of Gayatri Mantra. White represents the light that guided us through the darkest period of history. It represents the hope that fueled our struggle for freedom. Jai Hind. Peace is the prominent characteristics of nationalism. Our mother India had carried many of supreme personality in her womb. Mahatma Gandhi, who paved the way for India's freedom by the means of non-violence. Dr. Bhimrao Ambedkar, who made the constitution seeking peace in the nation. Swami Vivekananda, who spread the message of peace in India as well as abroad in his youthful spirit. Mother Teresa, who scattered the seedling of peace not by her words but through her actions. Dr. Abdul Kalam, who instead of his dynamic profession worked for the peace of our nation. फिर जन्नत की गलियों में सब लोग ये नगमा गाएंगे। रिंद पोशमाल गिंदने द्राय लो सरगम के मीठे मीठे सुर घोलो, बिंद पोशमाल गिनने गाय लो। हे आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने। आओ यारो मेरे संग संग बोलो, बिंद पोशमाल गिनने गाय लो। आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुना
talk about a color that represents the very sense of our nation, growth and prosperity, that is green color. Green is symbol of nature, harmony and balance. It reminds us love, field, forest and landscape that a country is blessed with. Green also represents the inspiration and hope of our nation. Moreover, green is a color of unity and equality that we must work together to build a brighter future. Jai Hind! अब हम क्या करें भाइयों, अंग्रेज सरकार हमें लूट कर चले गई है। क्या करें भाइयों, अब हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए ताकि हम अपने भारत को ऊंचाई तक ले जा सके। अभी पता चला है कि स्वामीनाथन जी ने भारत में हरित क्रांति लाने का संकल्प किया है। इसके लिए हमें एकजुट होकर मेहनत करनी होगी। हाँ, मेहनत करनी होगी। 5 साल बाद 5 साल बाद भाइयों, खुशखबरी भारत मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। Tricolor of India flutters atop with pride. Saffron, white and green, it holds the chakra form inside. The tricolor of India flutters atop with pride. Saffron, white and green, it holds the chakra form inside. ये तिरंगा हमारा ऊंचा रहेगा, ये तिरंगा हमारा ऊंचा रहेगा। What a beautiful performance. Let's have a big round of applause for our loving students. Our history is repleted with stories of struggle and courage. Just as our nation's defenders stand strong, resilient, and ensure our safety. Each step in this celebration is tribute to our beloved nation. The rhythm of our dances echoes the heartbeat of India. Now, let's welcome our dearest students on the stage with a big round of applause. भारत देश हमारा प्रणाम। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा।
कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। Let's give it up for our spectacular dance group. Your performance added a lively and colorful dimension to our celebration. Freedom is never dear at any price. It is the breath of life. The soil of our motherland has witnessed countless struggles and sacrifices. We salute and thank our freedom fighters who gave their lives and made great sacrifices. This is the reason we are here together to celebrate this day today. Let's dedicate this Independence Day to the sons of the nation through performance. 28 सितंबर 1907 बांगा गांव पंजाब, एक मां की कोख से एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में युवा और क्रांति की परिभाषा ही बदल दी। जानता है ना तू, अब भी वक्त है, गुनाह कबूल कर ले, सजा कम हो सकती है। ये गिरी हुई हरकत तुम लोगों ने की है मुझे फंसाने के लिए, क्योंकि तुम लोग डर गए हो और डरना भी चाहिए। अवाम जाग रहा है, इन अंग्रेजों से कह दो कि तुम दबा कर निकल लें, वरना लात मारकर खदेड़े जाएंगे। What did he say? Sir, I am saying the choice is yours, sir. Leave my land or get thrown out. थोड़ी सी धूल मेरी धरती की, मेरे वतन की, थोड़ी
भौंकने वाली धक 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 सांसें, चिन्ह हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती, मोहे मोहे तू रंग दे बसंती। मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। मोहे रंग दे बसंती, बसंती रंग दे बसंती। नहीं सिन्हा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जो मैं करना चाहता हूं उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं कर पाया हूं। पंडित जी को संदेश भिजवा दो कि जंग अभी जारी है और मैं मैदान छोड़कर नहीं आ सकता। इसका अंजाम जानते हो भगत? फांसी। मर के क्या हासिल करोगे? जानते हो मेरी दिली ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूं कि मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाऊं, ताकि मेरी मौत देश के नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके और वो सभी बिना डरे जंगे आजादी में कूद पड़े। अगर ऐसा हुआ ना दोस्त, तो उस आजाद भारत का सपना जो हमने देखा है जरूर पूरा होगा, जहां कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। हवा, पानी, फसलें, सब पर सबका बराबर का हक होगा। जात पात को लेकर खून खराबा नहीं होगा। हिंदू भाई, मुसलमान भाई मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे। हर मजहब, हर धर्म, हर जात के लोग एक ही आसमान के नीचे सुरक्षा की सांस लेंगे। और वही होगा सही मायने में आजाद भारत, सुनहरा भारत, हमारा भारत। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। शाबाश। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। धन्यवाद आपका। सिद्ध से जुनून तक है जाना। मैं लड़ जाना, सिद्ध से जुनून तक है जाना। मैं लड़ जाना, मैं लड़ जाना। अल्लाह जिंदे बन के कमन तक तुरिया, तब के मौत नू बचा। सारे बथर सर कुत्ते सारे हो। अल्लाह जिंदे बन के कमन तक तुरिया, तब के मौत नू बचा। सारे बथर सर कुत्ते। क्यों रे भगत, सबके बारे में सोचता है तू? अपने आदर्श, अपना वतन, अपनी लड़ाई, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचता? हाँ, जब भी वतन के बारे में सोचता था तू ही तो नजर आती थी, तुझे ही तो देखता था। तू ही मेरी प्रेरणा, मेरी शक्ति है। इतनी छोटी उम्र में सबको छोड़कर चला जाएगा तू? भगत सिंह, वक्त हो गया है। 2 मिनट जेलर साहब, लेनिन के बारे में पढ़ रहा हूं। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। चलिए, आज आप लोगों को देखने को मिलेगा
कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। ना तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही रब का यकीन। छंगा। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। Let's give a big round of applause for our performers who just gave an outstanding performance. Your energy and passion on the stage were infectious. Winners are not gifted, they just work hard and then succeed on purpose. Judeans have proved their talent in all streams. Now it's time to acknowledge the hard work. I request our Honorable Chief Guest, Miss Meena K. Pawar, our Director, Reverend Father Burgess Kachapilli, and our Principal, respected Sister Vinaya, to give away the prizes to our students. It is a matter of immense pride that the students of our school who represented our school at the Jalandhar zonal level competition in athletics and have brought laurels to our school by being the winners and runner-ups respectively. Let's celebrate the winners of 800 meter under 17 race. Congratulations to Miss Tanisha from grade 10th Desi who achieved first place and also selected for regional games. Miss Tanisha, please come forward to receive your award. Let's acknowledge the athlete who finished as a runner-up in the under 17 800 meter race and also selected for the regional games. A big round of applause for Miss Sukmani from grade 8 Lily. Miss Sukmani, please join us on stage to accept your prize. It's time to honor the athlete who secured third place in shot put competition and also selected for regional games. A big round of applause for Master Netik Teji from grade 9th Desi. Please join us on the stage to collect your prize. The badminton competition was held at Dwaba College, Jalandhar on 3rd of May 2024, and we are pleased to recognize the runner-up team in the under 14 badminton competition. Congratulations to Master Jeevan Jot Singh, Master Pranav Sharma from grade 7th Rose and Master Pratish from grade 7th Lily for their outstanding performance. Please come forward to receive your prize. We are pleased to recognize the runner-up team in badminton competition under 17. Congratulations to Master Danish Banot from grade 10th Lily, Master Ranjot Singh from grade 9th Lily and Master Ishan Bansal from grade 9th Desi for their outstanding performance. Please come forward to receive your prize. The Kho-Kho competition was held at St. Joseph's Convent School, Phagwara on 4th of May 2024. Now I call upon the members of under 17 Kho-Kho team to come. Now I call upon the members of under 17 Kho-Kho team to come forward on the stage. They are runner-ups of zonal level competition. Let's give a big round of applause for these students.
Let's give a big round of applause for these students. Let's give a hearty round of applause for our champion Master Danish Banot from grade 10th Lilly, who has secured the first prize in the ICSE regional level badminton competition under 17 and selected for the Association of Schools for the Indian School Certificate National Games. And he also won the second prize for badminton competition in under 17 in Jalandhar District Championship, and under 19 he got the first prize in the same. Let's invite our sports stars to come together for a group photo. Thank you. Patriotism is the feeling of love and respect for the nation. While there are many ways to express patriotism, music has always been an essential component that binds a nation together. So let's now revel in the melody that celebrates our nation's spirit. Call our choir group for the song.
A big thank you to our choir group for that amazing performance. Let us all give them a big round of applause. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A movement comes, which comes, but really in history. When we step out from the old to the new, India discovers herself again. Indeed, real freedom enlightens every heart and soul, enriching each one and bringing newness to everyone. This is the very newness that has inspired us to share this joy with you all. And to enhance this joy even more, our students are here to give you all the performance of the day, the grand finale of today's event. What an incredible performance. Let's give a huge round of applause to all the performers for an unforgettable grand finale. Thank you for making this event special.
We are very fortunate to have the Honorable Chief Guest Ms. Meena K. Pawar with us. Ms. Pawar, it is with great pleasure that I invite you to the stage to share your thoughts and address the gathering. Good morning, all of you. ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਲਈਏ ਉਹ ਪ੍ਰਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਅੱਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 25000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਣ ਅਸੀਂ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਡਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ Thank you, ma'am, for your inspiring words. They have truly enriched us. We will cherish your words of wisdom and look forward to applying them in our personal and professional lives. Thank you for adding immense value to our gathering today. Now it's time to express our gratitude. Here we have a memento, a token of our appreciation. I request our director, Reverend Father Verghese Kachapilli, and our principal, respected Sister Vinya, to kindly present a token of love to our chief guest. Dear friends, we all celebrate our birthdays, but how lucky are those who celebrate their birthdays on the Independence Day of India. And our chief guest, Miss Meena, is one among those privileged to have her birthday on the same day, that is on 15th of August. Dear ma'am, in fact, it is a proud moment for us to have you among us today. And since you have your birthday on the Independence Day of India, and quite coincidentally you have chosen to serve our country, we have prepared a small surprise for you out of respect and love for you. Dear ma'am, I request you to come forward. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday
Happy birthday, respected ma'am. Gratitude is a memory of the heart. Thanksgiving is a pleasing expression of love. So I would like to call Miss Levisha to share her vows of gratitude. The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. A warm and cherished morning to our most valued honorable chief guest, Miss Meena, Management Committee, qualified teachers, dear friends and everyone. It is my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked hard to make this Independence Day celebration really successful. On behalf of I, Lavisha, St. Jude's Convent School, Shakot, and the entire fraternity of the Institute, first of all, my sincere thanks to Almighty God for making today's event a grand success. By His blessings and grace, we are able to make the event what it was. On behalf of my school, I give really a heartfelt vote of thanks to our chief guest, Miss Meena, who spent her busiest time gracing the occasion. Today we had the opportunity to hear your thoughts, and this is definitely encouraging us in our future events. Your thoughts have enlightened our minds and shown us a new path. A special thanks to our director, Reverend Father Verghese Kachapalli, Venerable Principal Sister Vinaya, for being the catalyst that inspired us to do our best and stand as a pillar of power. With deep sense of appreciation, we thank our loving teachers and students who have put in endless hours of practices to today's performances so memorable. Your enthusiasm and talent have brought the spirit of independence alive in all of us. To our support staff who worked tirelessly behind the scenes to ensure everything ran smoothly, we are immensely grateful. Lastly, I extend my heartfelt to thank all of you, the audience, for your active participation, for making this event a truly patriotic and vibrant occasion. Let us all continue to work together to uphold the values of freedom and democracy that our forefathers fought so hard to secure. May we carry the spirit of independence not just on this day, but every day. Thank you. Jai Hind. Thank you, Miss Lavisha. As we come to the end of this felicitation program, on behalf of everyone here, we would once again like to thank our esteemed guests for their invaluable contributions and for gracing us with their esteemed presence today. I request all of you to kindly stand in unison for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे